अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 16 इट कुडंट बी डन. So let's start it, and before reading the poem let's know about its author जिसका नाम है एडगर एल्बर्ट गेस्ट. He was born in 1881 and he died in 1959. He was born in England, English born है लेकिन American poet है, ठीक है. Popular in the first half of the 20th century, जो 20th century का first half है, यानी कि 1901 से 1950 तक, इसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे और इनको टाइटल दिया गया पीपल्स पोइट का. और इट कुडंट बी डन इनकी एक पोइम है और एक पोइम लाइफ है और एक और पोइम है डोंट क्विट. अब स्टूडेंट्स इनके पोइम से ही आपको नेम से ही अंदाज़ा होगा कि ये इंस्पिरेशनल पोइम्स लिखते थे. पोइम्स ऑफन आर इंस्पिरेशनल एंड ऑप्टिमिस्टिक. तो ये नेम्स के जो पोइम का टाइटल है उससे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की पोइम्स होंगी. मोस्ट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पोइम्स. तो ये इस वजह से मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने मोस्ट इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग पोइम्स लिखी हैं. और वन ऑफ द इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पोइम्स जो है वो इट कुडंट बी डन, जिसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है. इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. हैव यू एवर डन एनी डिफ़िकल्ट टास्क? कोई ऐसा मुश्किल काम जो आपने किया है और आपको आसपास के लोगों ने कहा है कि ये नहीं हो सकता या आप नहीं कर सकते. नरेटेड. आप एक दूसरे को बता दें कि ऐसा कोई काम जो आप लोगों ने किया हो, ठीक है. सो लेट्स बिगिन द पोएम. The first stanza. स्टूडेंट्स राइम स्कीम देख लें. मीटर के एंड पे जो वर्ड्स हैं डन, देन सेकंड पे रिप्लाइड, देन वन, देन ट्राइड. ए बी. फिर ग्रिन, इट, थिंग, इट. सी डी, ठीक है. सो let's start it. Somebody said that it couldn't be done. ये पहला सेंटेंस जो है वो किसी ने कहा कि ये हो नहीं सकता. But he with a chuckle replied that maybe it couldn't, but he would be one who wouldn't say so till he had tried. So he buckled right in with the trace of a grin on his face. If he worried, he hid it. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. In the first stanza, the poet is saying us about a person who is totally different from other people. So the poet is talking about a person who is totally different from the rest of the people, and he is motivated, he is optimistic, and he believes in himself. And somebody said it couldn't be done. People said mostly about things that no, how can you achieve such target? आप कैसे ये काम कर सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है. But he with a chuckle replied that maybe it couldn't. Chuckle is laughing, you know. So वो क्या कहता है कि maybe it couldn't, हो सकता है ये ना हो, but he would be one who wouldn't say so till he had tried. Now, the poet is talking about a person who never refuses doing anything until and unless he himself has tried it. And he will not say that no, it couldn't be done. He will just wait for it, and he will put his efforts
After trying, then he will say something that whether it could be done or it wouldn't. Like किसी काम को करने से पहले वो ये नहीं कहेगा, उसको ट्राई, जो कि मोस्टली आपको पता है एटीट्यूड लोगों का यही होता है कि किसी भी काम को करने से पहले ही वो ये कह देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो करना नामुमकिन है। लेकिन वो जो ऑप्टिमिस्टिक आदमी है वो क्या कहता है, लाइक ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ आइडियल फॉर द पोइट। पोइट के लिए वो एक आइडियल का किरदार अदा कर रहा है और पोइट दूसरों को भी वो आइडियल किरदार से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो कि आम लोगों की तरह नहीं सोचता, जो कि दूसरों के रिपीट किए हुए अल्फाज को रिपीट नहीं करता, बल्कि वो ख़ुद ट्राई करता है, कोशिश करता है। वो पहले से ही किसी बात का जो है वो बारे में ये नहीं सोचता कि ये नहीं हो सकता। So he buckled right in with the trace of a grin on his face. If he worried, he hid it. अब वो क्या करता है कि जब उसे बताया जाता है कि ये हो नहीं सकता, तो वो कहता है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अब कोशिश करते हुए भी उसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है कि अगर उसे किसी किस्म का कोई शुबा है, कोई डाउट है, कोई खौफ है कि ये मैं पता नहीं कर पाऊँ या नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी फीलिंग्स हैं उसके दिल में, तो वो उसको छुपा लेता है, उसको कवर कर लेता है। चेहरे पे उसके हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done and he did it. और वो काम करते हुए वो नाराज़ भी नहीं होता, वो अपने गुस्से में भी नहीं आ रहा, वो अपने नर्व्स को कंट्रोल किए हुए है, बहुत काम है और साथ में वो अपना किरदार अदा कर रहा है, वो काम करने की कोशिश कर रहा है। और जब किसी इंसान का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो ऑफ कोर्स वो वही काम कर लेता है, वो उसको अचीव कर लेता है, वो उस तक पहुंच जाता है। The next stanza, somebody scoffed, "Oh, you will never do that. At least no one ever has done it." But he took off his coat and he took off his hat, and the first thing we knew he would begin it with a lift of his chin and a bit of a grin. Without any doubting or quitted, he started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it. Now in the next stanza, again the poet describes the behavior of an ideal person, of a person who is ideal for the poet. The poet says that if people will tell him in a satiric manner, scoffed him, "Oh, you will never do that." ये इस सेंस में हम कहते हैं जब लोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए उसको कहते हैं कि ये तो कभी तुम कर ही नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकता, तुम कभी भी इसको नहीं कर सकते। सो व्हेन पीपल मेक फन ऑफ हिम एंड पीपल विल टेल हिम दैट यू कैन नेवर डू सच एंड सच थिंग, और यू कैन नॉट अचीव योर objectives or your goals, or you cannot achieve your dreams, at least no one ever has done it, क्योंकि आज तक कोई भी ये कर नहीं पाया, तो तुम कहाँ से कर पाओगे। हमने अक्सर देखा है लोगों का ये डिस्करेज करने वाला एटीट्यूड, जब वो आपको डिस्करेज करते हैं कि वो नहीं कर पाया तो आप कैसे कर पाओगे। But he took off his coat and he took off his hat, and then the attitude of that person, and he will do what? He took off his coat. It is in that sense कि वो ये सुनने के बावजूद भी जब लोग उसको कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, they make fun of him and they will tell him that how can you do this? Nobody has ever achieved such and such target. How can you do it? Who are you? Look at yourself. You have no we don't find those when people will look at him and they say that you do not have that vigor to do it,
but the person is so positive and he keeps on he just concentrates on concentrates on achieving his target with a very positive attitude and a smiling face. And the first thing we knew he would begin it, because this is what his attitude is before starting a work, with a lift of his chin and a bit of grin, with a smile, with a positive attitude, without any doubting or query. It means there is no doubt, or if even if there are worries, he just bury them in his heart. He never brings them on the surface or on his face. Nobody can judge that this person is confused or he is fearing or he has doubts. He started to sing as he tackled the thing. Now, when he starts the thing, so he has no questions regarding that thing, he has no queries, he just performs the action. And because of this positive attitude, he is able to tackle with the thing, to achieve the target, to do what people used to think was impossible. So this is how, like, the person has two qualities. The first one is that he never believes in this, that if people have said that you cannot do it, so I will put my hand on another hand and I'll sit and wait that nobody can do it. But no, he has a positive attitude. He just starts action to do it, to see whether he is able to perform such and such action or no. वो खुद करता है, वो खुद करके दिखाता है, और जब उसे लगता है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता. लेकिन किसी भी, आपको पता है, ऐसे काम को स्टार्ट करने से पहले जिसमें लोग आपको बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपके दिल में भी वो डाउट्स सर उठाना शुरू हो जाते हैं. तो सबसे पहले आपने अपने आप से लड़ना है, अपने फीलिंग्स को सेटिस्फाई करना है, अपने आप पे ट्रस्ट को कायम रखना है और उसको बिल्ड करना है, ताकि आपके अंदर वो क्वेश्चंस ना आए. और अगर सपोज़ कोई इस तरह के डाउट्स आ जाते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा, तो ये मैन जो है वो इसका दूसरा ट्रेट यही है कि उसको अपने आप पे ट्रस्ट है और वो अपने डाउट्स को जो है वो प्रेस कर सकता है, उनको जो है वो नीचा दिखा सकता है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काम परफॉर्म करके सबको दिखाता है. There are thousands to tell you it cannot be done. Now see, the poet says that usually people have this attitude that they keep on telling you cannot do it, this cannot be done. There are thousands to prophecy failure. There are so many people who keep on telling you, they prophecy, पेशन गोई करते हैं, ये तो नाकाम होगा, ये तो कभी भी हो नहीं पाएगा. There are thousands to point out to you one by one dangers that wait to assail you. But just buckle in with a bit of a grin, just take off your coat and go to it. Just start into sing as you tackle the thing that cannot be done, and you will do it. So first, the poet was describing another person. Now in this stanza, the poet is motivating us. He says that in your life you will see so many of the people who will tell you that you cannot do this thing, or this is impossible. This is not possible for you to do it. So there are thousands of people who will say that you will fail, you will not be able to get success in this mission, you will not be successful. And there are thousands of people who point out you that if you will be able to do this thing, then there is the danger of that thing. If you will tackle with that danger, then there will be that danger. Now they keep on telling you one by one just to discourage you.
So poet meant to say that you should not trust such and such people, but just buckle in with a bit of a grin. The poet says that you should have that positive attitude of that person in you, that you should be ready to try that thing by yourself, and you should channelize all your efforts in one direction, be specific to achieve that target, to achieve that goal, and concentration should be there with a positive attitude. Only then at the end of the day you will be able to show people that they were wrong and you were right and you did it. But once when you achieve that target, people start appreciating you. At first they discourage you, you cannot do it, आप नहीं कर सकते, आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो वही लोग आपको जो है वो हीरो बना देते हैं और वो ये समझते हैं और आपकी मिसालें देना शुरू हो जाते हैं। सो पोइट हमें यही बता रहा है कि ऐसे लोगों की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना है, आपने हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है, आपने दुनिया को वो चीज़ करके दिखानी है जिसको वो इम्पॉसिबल समझते हैं। और पोइट समझता है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी हार्ड वर्क्स ही इस बात को पॉसिबल बना सकते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने नेचर को भी, अपने जो शकूक व शुबहात हमारे दिलों में हैं, हम उनको भी प्रेस करें, उनको भी अपने कंट्रोल में रखें, उनको अपने चेहरे पे ना आने दें, उनको भी एक ऑब्वियसली ही अगर आप इंसान हैं तो आप में इस तरह की फीलिंग्स हैं, होती हैं, हर इंसान में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना फिर इंसान का काम होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप कोई भी काम अचीव कर सकते हैं। सो यही सब कुछ जो है वो इस पोएम का मकसद है और पोइट जो है वो यही सब कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा था इन दिस पोएम। सो ऑलवेज़ हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, और इस एटीट्यूड को अगर आप अपना लेते हैं लाइफ में तो आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द समरी ऑफ दिस पोएम in this manner as you understood what is in this poem, and one by one you will tell them, but don't repeat. As you see in the poem, the poet was at the last lines, the poet was repeated the same thought, लेकिन आप जब समरी लिखेंगे तो आप जो है वो रिपीटेड नहीं करेंगे, आप उनके जस्ट लिखेंगे, वो मेन पॉइंट्स उनको लिख के आपके पास उस पोएम की समरी आ जाएगी। So that's it for today. Thank you so much and Allah Hafiz.